Hello everyone, welcome to Krino Forensics. This is me, Amritha, happy to be a volunteer at Krino Forensics. So today we are going to explore the topic forensic physics. फिजिक्स हाँ बहुत कुछ चीज़ है भाई फिजिक्स में मैथ्स लॉस ऑफ फिजिक्स प्रिंसिपल्स कितने सारे हैं तो ये सब यूज़ करके हम एक क्राइम सीन को कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे यही हम इस वीडियो पे देखेंगे सो लेट्स गेट टू द डेफिनेशन. So, forensic physics is the application of the laws of physics to analyze crime scene evidence and reconstruct incidents. जैसे कि मोमेंटम फ्रिक्शन न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन ये सब अप्लाई करके वी कैन इन्वेस्टिगेट स्किड पैटर्न्स स्पीड ऑफ अ व्हीकल ड्यूरिंग एक्सीडेंट डैमेज पैटर्न्स many more things. So in this slide, I have listed out a few fundamental principles with their application in forensic science. For example, हम Newton's laws of motion use करके we can analyze vehicle collisions, projectile motion. We can analyze the projectile motion of fired bullets or thrown objects. हम fluid dynamics use करके blood spatter analysis कर सकते हैं, etc. etc. So let's get to some history. Ancient times में they started to investigate the wounds that were caused by each weapon. Then in 15,000s, the study of projectile motion was done by scientists like Galileo and Newton. Then in early 19,000s, forensic ballistics, formally introduced by Calvin Goddard, who developed a comparison microscope to match bullets with guns. फिर अब मॉडर्न एरा में 3D इमेजिंग डिजिटल डाटाबेसेस एंड हाई स्पीड फोटोग्राफी एडवांस्ड फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स ये सब यूज़ करने लगे. सो हम कुछ चीज़ों को अब डिटेल में देखेंगे. सो लेट्स गेट टू बैलिस्टिक्स. इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिविजन्स इन फॉरेंसिक फिजिक्स where we study bullets, missiles, bombs, उनके इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट विद द टारगेट उनके प्रोजेक्टाइल मोशंस वो कहाँ से फायर किया है कैसे फायर किया है ये सब हम इस डिवीजन पे देखेंगे. सो इस डिवीजन को अगेन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. इंटरनल बैलिस्टिक्स, एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स एंड टर्मिनल बैलिस्टिक्स. इंटरनल में जो भी एक गन या फायरआर्म के अंदर होता है जैसे कि गन पाउडर बर्न प्रेशर बिल्डअप एंड बुलेट एक्सेलरेशन. वी ऑल्सो एक्सामिन द गन पाउडर रेसिड्यू तो ये सब इसमें आएगा. एक्सटर्नल में बुलेट का मोशन जैसे ही इट लीव्स द गन या फायरआर्म जो उनका प्रोजेक्टाइल मोशन है वो सब हम एग्जामिन करते हैं. हाउ द ग्रेविटी एयर रेसिस्टेंस विंड ये सब उनको कैसे अफेक्ट करते हैं एंड ऑल्सो द बुलेट शेप इज एग्जामिन्ड इन दिस. कमिंग टू टर्मिनल बैलिस्टिक्स, एक बुलेट का बिहेवियर जैसे ही इट हिट्स अ टारगेट और अ बॉडी जिस तरह के वोन्स वो क्रिएट करते हैं. सो ये सब हम टर्मिनल बैलिस्टिक्स में देखते हैं. कमिंग टू सम रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. बुलेट मैचिंग. सो अगर हमें क्राइम सीन में हमें एक बुलेट मिल गया है वी कैन एक्चुअली compare it using a comparison microscope with a bullet that is not fired. So we can see how the rifling marks are. We can see if it is the same bullet or not. We can analyze the shooting distance. If he has fired the bullet from close distance or far distance by analyzing its burn marks, GSR pattern मतलब gunshot residue pattern, bullet penetration, ऐसे. And we can also reconstruct the shooting by analyzing the trajectory. जैसे कि बुलेट होल्स हमको हेल्प कर सकते हैं कौन से डायरेक्शन में आया है वो ये सब देख सकते हैं. एंड ऑल्सो एंट्री वर्सेस एग्जिट वूंड्स जैसे कि हमने बोला है टर्मिनल बैलिस्टिक्स में हम वूंड्स देखते हैं. इट हेल्प्स द फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट. वो लोग वूंड्स को देखते पता चलता है कि कौन सा एंगल में फायर किया है व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फायर ये सब देख सकते हैं. सो ये पहला फोटो एक कंपैरिजन माइक्रोस्कोप का है वेयर देयर 2 बुलेट्स आर कंपेयर्ड. ओके देन सेकंड पिक्चर. सो वो कौन से कैटेगरी में आएगा पहला पिक्चर आएगा इंटरनल बैलिस्टिक्स में. सो सेकंड एंड थर्ड हम देख सकते हैं. सेकंड हम डिस्टेंस एनालाइज कर रहे हैं थर्ड पिक्चर को हम ट्रेजेक्ट्री एनालाइज कर रहे हैं. तो दोनों एक्सटर्नल बैलिस्टिक्स में आएंगे. सो इन द फोर्थ पिक्चर वी कैन सी एंट्री एंड एक्सिट वूंड्स so which comes under terminal ballistics. So now coming to using this for crime scene reconstruction. So it is used for recreating events at a crime scene by applying the principles like motion, force, trajectory, energy. कैसे एक crime हुआ होगा
कौन किया होगा, कैसे वो, सपोज अ बर्गलरी हैपेंड, हाउ डिड ही एंटर द हाउस. We are recreating the events hypothetically and we are trying it out. We are thinking of how it happened. We are trying to give a scientific explanation and so that it can be provided as an evidence. In the same way, accident reconstruction. Suppose there is a vehicle accident. We try to recreate the scene so that we understand what speed might the vehicle have come in, what was the cause, what was the impact. So we try to analyze things so that it aligns with the evidences we get from the crime scene. So in this image, it is just an example. वो एक क्राइम सीन का 3D इमेज निकाला है. It's kind of recreating the crime scene so that we can see what have happened, because once it happens, it doesn't stay the same, right? We know a crime scene doesn't stay the same. It changes with time. So once we have this image, हम अगर फ्यूचर में कुछ देखना चाहते हैं तो we can use these devices. So in the next picture you can see in the second picture, that is a device that is used to take a 3D image, okay, in a room or of a crime scene. So there are many such devices like that. So these are very much helpful in today in solving crimes. So coming to glass fracture analysis, it is very helpful in shooting, assault cases, burglary cases. Suppose somebody has broken a window, we can understand by examining the window, the glass. We can understand what was the direction of force, what was the type of force used, वो point of impact क्या था, blunt object यूज़ किया था या फिर sharp object यूज़ किया था, कौन सा crack पहले हुआ था. So these things we can analyze by understanding glass fracture analysis. So, in brief, three types of fractures: radial, concentric, hackle marks. रेडियल फ्रैक्चर्स में एक पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट होगा, उधर से वो पॉइंट ऑफ लाइंस बाहर जा रहा होगा, सो उनको हम रेडियल फ्रैक्चर्स बोलते हैं. कमिंग टू कॉन्सेंट्रिक, अराउंड द इम्पैक्ट, वो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल शेप में होगा, उनको हम कॉन्सेंट्रिक फ्रैक्चर्स बोलते हैं. एंड हैकल मार्क्स, दे आर द रिडजेस शोइंग द डायरेक्शन ऑफ क्रैक्स, कौन से डायरेक्शन में वो इम्पैक्ट क्रैक हुआ है. So that is shown in hackle marks. So coming to the picture, we can analyze the concentric fracture. So point of impact से वो concentric वो circular shape में है, and we can understand the radial fractures. Those are radiating outwards from the point of impact. Coming to optical and laser applications, very helpful, as we have seen 3D crime scene mapping में. It accurately makes 3D models of crime scenes. They very precisely captures the positions of blood stains, bullet holes, bodies, ये सब. And it detects luminol and alternate light source. So they detect invisible blood stains using chemical and UV blue light reactions. Now we use optical microscopy to examine the fibers, hairs, glass, paint at very high magnification. Then laser trajectory kits, it can determine the bullet paths, shooter position, etc. Then holography and interference patterns, they are used in document examination. They are used to detect tampering. Okay. Then spectroscopy, it can identify chemical substances, drugs, or explosive residues. It's considered very helpful because it performs at a high speed, non-destructive है, and it helps visualize and present evidence in court. So coming to modern technologies in forensic physics, कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की है. Again, 3D laser scanning, it creates precise, right, full scale crime scene reconstructions. Then we use high speed cameras. They can capture fast events like gunshots, impacts, frame by frame, so we can examine it very precisely. Then we use drones for aerial crime scene mapping. Then simulation softwares, it recreates accidents or shootings. Then AI and machine learning, it assists in pattern recognition, trajectories, and evidence comparison. Then augmented reality, it helps investigators and juries visualize events in 3D space. So these are some of the modern technologies that are used. Many more are being developed, which makes forensic physics more precise, interactive, and courtroom ready, enhancing justice through science. So, coming to the end of the topic, we have reached our conclusion. We have seen forensic physics, कहाँ पे apply करते हैं, what use does it have,
how we apply the forensic principles. We have seen ballistics, glass fracture analysis, optics and laser, modern technologies. इन सबको हम brief में overview करके गए हैं. So these all teaches us that it proves that even the laws of physics can speak for the silent. So I hope you guys enjoy the session. Please drop your comments below if you have any questions or if you want us to explain any topic in detail. We would be happy to cover them for you. And the presentation document, it will be shared on all our social media platforms. You can directly access the document from there. So for more information or queries, please reach out to us through any of our social media channels, which can be seen in this slide. So stay tuned for next video to learn with Krino Forensics. Thank you.